microprocessors, that's unit 2, and geophysics, which is unit 1 of paper 3, applied physics. The last unit anyways is being handled by Milind sir. Now, before I go to the microprocessors per se, can you tell me what is a computer? What is a computer? Can anyone tell me what is a computer? Computer is a technological device which is used to perform various tasks. Computer is a device that is used for performing various tasks. Okay, let me share the screen. Um, okay, you said computer is something, computer is something, a device to perform various tasks. Anyone else? Debashish, you were trying to tell me something? I was repeating the same thing, and I was telling that without internet access we can't use the computers. I didn't get you. Please be a little clear. Then I was repeating the same thing, and I was adding up the point that without internet access we can't use we can't do some tasks. So I was adding up No, this no, point no, no, also. no. I don't take that. Without internet, you can't use a computer. Yeah, ma'am. Nowadays internet is like compulsory. So No, Not not compulsory. I don't think so. Anyone else has to say anything on this? No internet, no task. No, I would like to add it's an electronic device, not just a device. What? What did you say? No, I'd like to add that it's an electronic device, not just any device. क्या बोला क्या बोला? It's just an electronic device, right? Yeah. And on that various tasks we can add as efficiently and accurately. You can do the task efficiently and accurately. Anything else? Ma'am, it is an electronic device for storing and processing data. So storing and processing. Processing he has already said, storing and processing. Let's add it, okay? Anything else? Computer basically has microprocessor. Or I would say a processor. Micro or macro, we see it shortly, right? Micro meaning Extremely small. very small. And macro is big. So the processor. Now, when we talk about a computer, we talk about a man-made machine, right? Or a MDC, man-made computer. Can you tell me a GMM, God-made machine, And humans? So I can say GDC, right? So when you look onto yourself, what is the processor? I think last time also I have asked you this question. brain. Processor in a GMM. It's It's the a brain. brain. What are the parts of a computer? What
What, ma'am? Basic parts include a CPU, motherboard, power supply, storage hard drive, RAM, and a display. right? Can I say this is my input section? This is my processor. This is the memory. And this is the output section. Am I right? Yes, ma'am. Input sends in data or memory sends in data, which is processed in the processor. The processed data may go back to the memory or may go back to the output device. Am I right? Yes, ma'am. From this GMM, what is the input? It's everything we see, basically. See here, all All our your senses, sensory, 6 senses. yeah, all your sensory organs are your input. There is a part in your brain which is a memory. है ना? छोटा दिमाग है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, छोटा ma'am. दिमाग. There is a processor which is your brain, and there is a memory, and the output device is once again maybe your eye, maybe your expressions, maybe your hands, feet, whatever is your output. Right? Yes, ma'am. What are these Yes, arrows? ma'am. What are these arrows? Function, ma'am. No. Sensory organs, expression, brain, memory. वो किससे Input connected है? signals. नहीं, वो किससे connected है? एक nervous system है तुम्हारा, nerves और veins, बराबर है? Yes, ma'am. Nerves and veins are there. So these are basically something which sends. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay. Basically, nerves and veins give you a connect, between the 4 blocks of your machine, right? They send signals, they take signals, they take the data, they send it to processors, so on and so forth, right? Yes. आप देख के बस कर दिया, आंख ने देखा भी वो देखना है किसी टाइम पे, इसके लिए भी तो कोई सिग्नल चाहिए ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are your nerves and veins. Now let's see what happens in a man-made machine. What are the input devices in a man-made machine? Keyboard, mouse. Keyboard, mouse, joystick, blah, blah, blah. Right? Then what are the devices in the output? It can be a LCD, it can be a Display. screen, it can be a printer, it can be anything, a plotter, whatever. Right? Memory.
Now, in the case of a human being, also, we have something known as a random access memory or a read write memory and a ROM. Your eyes do the job of seeing, eyes can't do a job of eating. Huh? Yeah, na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your ears cannot see, your ears can hear. Yes. Whatever the hand does is because of what it is programmed by the programmer, the God. So ये सब चीजें बन गई तुम्हारी रॉम, तुम खाली उसको यूज कर सकते हो, बराबर? Would you repeat it? हाँ, हेलो, मैम रिपीट करो, क्या आप समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा देखो, तुम्हारा जो आंख है, तुम्हारा जो कान है, तुम्हारा जो टंग है, ये सब चीजों को भगवान ने प्रोग्राम करके रखा हुआ है. इस प्रोग्राम को तुम Okay. बदल सकते हो क्या? नो मैम. No. तुम खाली इसको यूज कर सकते हो, तुम खाली इसको पढ़ सकते हो, मतलब तुमको इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर? यस मैम. दैट्स रीड ओनली मेमोरी. अब तुम जब कुछ सॉल्व करते हो, तुम वो अपने दिमाग में रखते हो 2 का टेबल, 3 का टेबल या व्हाटएवर, तो वो हो गया रैंडम एक्सेस. कभी तुमको जरूरत पड़े, अरे 2 into 2 क्या है, तो तुम सोच के वापस बोल देते हो चलो 4 है, बराबर है? यस समझ में आ मैम. रही है बात? Ma'am. दैट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. तुम अगर बाय हार्ट करो 2 into 2 is 8, तुम गलत हो, लेकिन तुमने बाय हार्ट किया है ना, तुम कभी भी उसको इरेज करके वापस पढ़ सकते हो. 2 into 2 is 4. सही है कि नहीं? हाँ. तो ये है रीड राइट मेमोरी. बात समझी? अब ये जो दिमाग है, ये हमारा प्रोसेसर है, ये प्रोसेस करता है ना, हम जो भी करते हैं उसको. लाइक हमको सुबह उठना है, हमको ब्रश करना है, हम वॉशरूम जाते हैं, हम नहाते हैं, हम कपड़े पहन के बाहर जाते हैं. सही? यस मैम. ऐसे तो नहीं कि तुम मतलब normal process. I'm not talking about you students taking bath or no. I'm just saying a normal process is you take a bath and change your clothes, or take a wash and change your clothes. With clothes you don't take a bath normally. बराबर है? ये सब एक प्रोसेस है. तुमको नेशनल कॉलेज आना है, तो तुमको पहले नेशनल कॉलेज जाना है, ये सिग्नल होना चाहिए. तुमको कहाँ घर से निकल के कैसे जाना है, वो गाना ठीक है. घर से निकलते ही रास्ते पे चलते ही रास्ते में है उसका घर. नेशनल कॉलेज रास्ते पे नहीं है, तो तुम कहाँ रुक गए, वो तुम्हारा दिमाग बोलता भाई इधर रुक जाओ. Basically, going to national college, there is a process. When you get into the physics department, college के गेट पे नहीं है physics department. बराबर है कि नहीं? हाँ. Every task can be broken into steps, and a processor performs these steps. Got it? Yes, ma'am. After ma'am. which you get a required output. सही? सही या गलत? Yes, ma'am. Depending upon the physics, solid state physics and solid state electronics, our big computers have reduced to small ones. The way back first computer was as big as a room. Do you know this? Yes, the IBM. यस मैम. Right? At that time, your diode, जो आज के दिन में हम छोटू सा डायोड देखते हैं ना, काला कलर का, ग्रीन सिल्वर रिंग उसको नेगेटिव Yes, टर्मिनल ma'am. का. Your transistors, way back they were as big as, you know, your 200 watts bulb and all that. So the computer was large.
तभी कीबोर्ड नहीं था, तभी अलग अलग लीवर्स थे तुम्हारे, तुमको जैसे गाड़ी में आता है ना वैसे गियर्स काइंड ऑफ अ थिंग, जिससे तुम चीजें तुम इस्तेमाल करो. Slowly physics changed the size of the various devices. The electronics of physics, electronics branch of physics, the solid state branch of physics came in semiconductors and all that. And that's how we have today something known as a small laptop, something known as a tab, something known as a good mobile phone, which has many things incorporated in it. Smartphones. So basically, the processors initially used to perform very less functions because it had very less capacity and used to occupy the entire computer used to occupy big पहले punch cards होते थे. Okay, you had CD drives, you had floppy drives. अब वो सब इतने नहीं हैं. We use PD now, pen drives. Right? So basically, are we getting it? Yes, ma'am. We will be studying a microprocessor. This microprocessor was the very first, not the first, rather, it was a third microprocessor which was developed by Intel. देखा Intel Inside ऐसा एक ऐड आता है कि नहीं? हाँ मैम. Yes, ma'am. Pentium Inside उसके बाजू में Yes, वो ma'am. Intel का साइन होता है. Intel is a company which makes processors, and you have as the size of the processor decreased, as the size of the various other surrounding interfacing devices decreased, the size of the machine decreased. Meaning the very we can say basic microprocessor. If you study, that is the Intel's microprocessor. Once you know that, once you know the language it uses, the 76 instructions that it goes through, you can ahead go and do any level of programming. Okay, so today we will begin with something known as microprocessor. As I say, micro, I will call it from now onwards, I will say hum MUPI lecture lenge. MUPI matlab microprocessor. Mu is micro, P is processor. Are we done? Are we through? Have we understood? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. So, beginning with your microprocessors, first let's go back. I will show you a presentation and keep speaking within the presentation. So, 1 minute. One more thing, this is not, दिख रहा है क्या? Share हुआ? No, ma'am. Share हुआ क्या? No, ma'am. No, हाँ, ma'am. एक मिनट. अब शेयर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is not my presentation. I'm very clear. But this is a presentation which entirely covers what I'm going to teach. I didn't want to make another presentation which will again give you the same thing. So this is a nice presentation. I'll post it to you all also. So the introduction to microprocessors. Microcomputer. अगर प्रोसेसर छोटा है तो कंप्यूटर भी छोटा होगा. It's a programmable machine. The two principal characteristics of a computer are it responds to a specific set of instructions in a well-defined manner. Now, what do you mean by well-defined manner?
डेफिनेशन कौन देता है, कैसे टास्क प्रोसेस करने का है, कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करना है? प्रोग्रामर. डू यू गेट इट? Yes, ma'am. Responds to a specific set of instructions in a well-defined manner. It can execute a pre-recorded. It can execute a pre-recorded list of instructions. That is a program. Its main components are CPU, input-output devices, and memory. Till here we have also done? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, input-output devices from now on will be called as I/O devices. Am I clear? Yes, ma'am. कळलं का? What will it be called? I/O. Okay. Input, output. I/O devices. Okay, ma'am. ठीक है? Now, microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर मतलब उसके अंदर जो सीपीयू है वो छोटू है. माइक्रोप्रोसेसर इज द सीपीयू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. डू वी गेट इट? डू वी गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Within the processor, what does a processor do? It does all the arithmetic and logic functions. It temporarily stores some data and it controls the flow of data. I repeat, a processor does what? Does all the arithmetic and logic commands, processing, temporarily stores the data and controls the flow of data. So a microprocessor is a programmable, very large scale integrated chip. Very large scale integrated chip मतलब उसके अंदर बहुत सारे components हैं. Large scale integration. It is a programmable, very large scale integrated chip, which includes ALU, which is arithmetic logic unit, register circuits. I will come to it. Register circuits, they are basically temporary storage spaces, and control circuits. Control meaning, abhi tumhare, when you are going to national college, suppose you are sitting in a bus, then that bus, उस बस में चढ़ने के बाद यहाँ उतरना है. ये लिंकिंग रोड का स्टॉप, सामने नेशनल कॉलेज है. उतरना, ये कंट्रोल सिग्नल तुमको आना चाहिए ना? आया ना? Yes, ma'am. Got me? So you have a control unit, brain. वहां से सिग्नल, आंखों से तुम देखते हो बस स्टॉप आ गया, फिर टांगों से उतरते हो. बट ये सिग्नल कौन देता है? तुम्हारा ब्रेन. सही है? सही जा रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now something known as a microcontroller. Today, we have automatic machines with us. Say you have your microwave ovens, you have your smartphones, then you have your washing machines, you have what else? You have your cars. Okay. Basically, consider a washing machine. Consider a washing machine. In the washing machine, तुम्हारा वो जो सब लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी है? Yes, ma'am. अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है? If it is a semi-automatic washing machine, you put the clothes, you on the tap, you put the powder, and you ask it to spin, not spin rather, wash. You ask the machine to wash. वो धोता है कपड़े साबुन के पानी से, वो रिंस करता है, नया पानी आता है, हम वापस चालू करते हैं, तो पानी वापस नया डालते हैं, फिर वो घंटी बजाता है ना, धुल चुके, फिर हम वापस पानी चालू करते हैं, और फिर बाद में
हम दूसरे टब में निकाल के उसको डालते हैं, वहां पे हम स्पिन करने के लिए रखते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें कुछ कुछ प्रोग्राम मेमोरी के अंदर है, ठीक है। अब जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसको हमको पानी का लेवल नहीं सेट करना पड़ता है, वो अपने आप वो लोड सेल होता है नीचे, वो लोड सेल लोड मेजर करता है, उस हिसाब से पानी उतना अपने आप बाद में पानी इनटेक बंद हो जाता है, वो रिंस होता है, वो स्पिन वॉश होने के बाद रिंस होता है, स्पिन होता है। एक कमांड पे डिपेंडिंग अपॉन द क्लोथ्स यू गिव द you select a particular command of wash and it washes, it dries, after which you just remove it and put it out for drying. तो ये है एक कंट्रोलर जिसके अंदर प्रोसेसर भी है जो प्रोसेस भी करता है, उसकी मेमोरी भी है और आईओ भी है। समझ में आया कि नहीं? प्रोसेसर और कंट्रोलर के बीच में microcontroller is something which controls and it's domain specific. It is domain specific. तुम्हारा वॉशिंग मशीन एसी का काम नहीं करेगा बाबा, एसी माइक्रोवेव का काम नहीं करेगा। Do you get me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Can I go ahead? Is it Ma'am. clear? Yes. Yes, ma'am. Microcomputer is a machine as a whole which does tack 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 things, meaning वो प्रोग्राम करता है। ओके, जनरल मशीन है। माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर रहने वाला प्रोसेसर है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? जिसमें प्रोसेसर है, मेमोरी एंड आईओ है सिंगल पैकेज में, और वो स्पेसिफिक काम करता। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड। ओके, कैन आई Yes. गो अहेड? Yeah, ma'am. ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ क्या? Microcomputer. Microcomputer बेटा, see this, there's a processor, there's a input, there's a memory, there's a output. हमने यही बात की थी कि नहीं? Yes, हाँ ma'am. मैम। Yes, ma'am. ये बीच में जो वायर्स है, जैसे हमारे वेन्स को, नर्व्स को सिग्नल्स मिलते हैं ना कि अब मुझे चलना है, अब मुझे रुकना है, अब मुझे देखना है, you know all those things. It's basically the nerves and the veins which connect it to a central nervous system. Yes, no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली कि 4 ब्लॉक रख दिया प्रोसेसर, सपोज तुमने एक जगह पर कीबोर्ड रख दिया, एक जगह सीपीयू का डब्बा रख दिया, एक जगह पे तुमने प्रिंटर रख दिया, हाँ, इनको जोड़ा नहीं।
तो तुम अगर उतरते हो कहाँ पे, तो तुमको पता है ना बांद्रा स्टेशन से 10 मिनट लगेंगे, हाँ कि नहीं? Yes. ये कैसे पता है भाई? कोई घड़ी है ना जिसको, तुम्हारा दिमाग एक घड़ी के साथ चलता है ना। तुम ब्रश लेकर टीथ ब्रश करते हो तो 10 घंटे तो नहीं करोगे ना। No, ma'am. No, ma'am. तुम 2 मिनट करोगे, 3 मिनट करोगे, नहाओगे 24 घंटे नहीं ना। तो हर चीज एक क्लॉक के हिसाब से सही जा रही हो? हाँ ma'am. So microprocessor is a Yes, ma'am. programmable. It is programmable, clock driven. Any processor is clock driven. Any action is clock driven. Yes or no? If I tell you to study, तुमने सोचा है तुम आधा घंटा पढ़ोगे तो आधे घंटे बाद तुम उठोगे, 24 घंटा पढ़ोगे। एग्जाम आएगा तो शायद उसमें भी मल्टीपल चॉइस आए तो बिल्कुल। Okay, so basically microprocessor is a programmable clock driven register based electronic device that reads instruction from a storage device, takes the data from an input unit, processes data according to the instructions and provides the result to the output unit. समझ लो? Yes, ma'am. पढ़ो, खुद पढ़ो, ध्यान से Once पढ़ो। again. वो डेटा लेता है इनपुट यूनिट से, प्रोसेस करता है अपने अंदर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम आर, एंड देन प्रोवाइड्स द नेसेसरी आउटपुट एट द आउटपुट यूनिट। पढ़ लो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Are all of you all with me, or you all are dreaming and gazing at the sky? Please go with you. Ma'am, आप देख सकती है. Huh? Understood, ma'am. I understand what you're saying. Thank you. Programmable perform different set of operation on the data depending upon the sequence of instructions supplied by the programmer. Clock driven whole task is divided into basic tasks and are divided into precise system clock periods. मतलब क्या हुआ? 50 minutes lecture, I am time bound, right? So in a day, if you have 4 lectures, 50 minutes का एक को, 50 minutes का दूसरे को, 50 minutes का तीसरे को, basically it is divided into precise system clock periods. Yes or no? A timetable. Yes. Register based is storage element. I told you registers are storage elements. I will come to details in some time. Electronic device fabricated on a chip. Chip मतलब IC. ठीक है? Can I go ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक क्वेश्चन है पूछूं. Yes, ma'am. हाँ बोलो, पूछो, जल्दी पूछो। मैम कौन सा, मतलब अभी सब बायोटेक्नोलॉजी में बोले जो इम्पल्स मिलते हैं, तो मैम कौन सा किसका वर्क है वो कौन डिसाइड करता है मैम? तो अब हमारे बारे में बात कर रहे हो तो मशीन के बारे में बात कर रहे हो? मैम मशीन के बारे में. हम जो प्रोग्राम लिखते हैं मशीन उस हिसाब से चलती है, याद रखना। मशीन खाली तुम्हारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, मशीन अपना प्रोग्राम नहीं लिखती। अगर तुमने प्रोग्राम में गलती की है, मशीन उसको वैसे ही लेके आगे बढ़ेगी। Ma'am, but if it is तुमने AI driven, then हाँ, if it is an AI driven machine, मैं AI तक नहीं गई। AI is giving it a brain, right? I have not gone to the AI technology. That is something which you add on, and then you have your so-called robots working, right? Who is that lady? Alisa. What is it? yeah, That it's robo, Elisa. Alisa, Al- right? So you have Alisa doing things, because once again, let's understand one thing. Even if it is AI, you have programmed it that way. अलीसा को खुद का ब्रेन है क्या? No. No. No, मैम. Okay. Now can I go ahead?
Yes, ma'am. microprocessor based system with bus architecture. Bus मतलब wires. इतना याद. Bus are a set of wires. ALU, arithmetic and logical operations like add, subtract, and or register array, store data during the execution of the program. Control unit provides necessary timing and control signals. It controls the flow of data between the peripheral and the processor. मतलब कोई भी चीज कंट्रोल में होती है ना. पहले खाना, Yes, ma'am. जब खाना भी बनता है बनने के बाद खाया जाता है ना, और Yes, ma'am. बनाने में भी स्टेप्स है. रेसिपी क्या है? इट्स अ प्रोग्राम ना, हाउ टू मेक अ थिंग, राइट. हर छोटा टास्क एक प्रोग्राम है. और कांदा फ्राई नहीं करके तुमने बाजी बना दी और ऊपर से कच्चा कांदा डाल दिया और वो रेसिपी में नहीं है, तो तुम्हारा खाना वैसे टेस्ट होएगा क्या? No, ma'am. No, ma'am. No. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी Yes, जा ma'am. रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि हो गया? आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलो, मेमोरी. अभी थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू व्हाट मेमोरी कैन बी, राइट. मेमोरी कैन बी रीड ओनली मेमोरी and random access memory. Memory is that one which you cannot change and one in which you can make your own programs and read and write, read and meaning use and change the programs. So memory stores information such as instructions and data in the binary format 0 and 1. समझ में आया? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, Input output communicates with the outside world. System bus. System bus is the communication path between the processor and the peripheral. Peripheral बोला तो input device, output device and memory. समझ में आया? ऊपर जाओ, वापस देखो. These are peripherals. These are peripherals. Do you get it? Yes, ma'am. System bus, communication path between microprocessor and peripherals, group of wires that carry bits. As I told you, everything is in the form of bits. आज के लिए मैं यहीं पे रोकती हूँ. Okay, and probably today is a Monday ना. कल किसका Yes, लेक्चर है? ma'am. कल नहीं है ना? नहीं. थर्सडे का 2 लेक्चर होता है ना? हाँ Yes, मैम, ma'am. आपका ही. मेरा नहीं है रे बेटा, ये टर्म में मेरे को एक ही लेक्चर है क्योंकि मैं वो स्टेफी मैम का 3 यूनिट है ना, तो उसको मैंने 2 लेक्चर दिया. मैम anyway, ये सैम 4 का टाइम टेबल नहीं दिया है? आपने दिया है क्या? 2 मिनट नहीं, मैंने मैम. दिया तो था. 1 मिनट देती हूँ तुम लोग को. होल्ड होल्ड.
लिखो। लिख रहे हो क्या? यस मैम। Monday NRA. That is Namrata. Wait, ma'am, Okay. you've done this. I've done this, na? Yeah, you've already given. I know you've given this. I have given, na? Monday is your, Yes, Monday ma'am. Wednesday is Namrata, Lakshman sir's, Wednesday Thursday is is Steffi ma'am, Lakshman, Steffi, fourth is Milind, last Friday is is Dinesh. Mills SSL. Yeah, Saturday दिनेश सर ने लिया था ना, yes. तो आई हैव गिवन ना. तन्मय, तू क्लास में नहीं होएगा. तभी तुमको मालूम नहीं है. ठीक है. मैम मैं हूँ। कौन था क्लास, कौन है क्लास में? मैम इट्स मी। हाँ, मैम मैं था। किसने पूछा था? मैंने अनाउंस किया था. ओके मैम। ठीक है. ओके. Can I now leave? Please inform the rest. Yes. Put it on the group. अभी बहुत सिंपल है. अगर रोज के रोज जब मैं ले रही हूँ तब अटेंड करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो बाबा तुम्हारे लिए राम भरोसे. Another thing, no question bank for multiple choice will be provided by the department in this term. The third thing, we may not go for multiple choice. Probably the college will reopen, so you may have a descriptive paper also. Am I clear? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.